Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we have got the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the fundamental rights in classrooms. See, when I say about fundamental rights क्या होता है? These are the basic human rights that are enshrined in the Constitution of India and which are guaranteed to every citizen of this country. And they are very much applied without any discrimination on the basis of race, religion, gender, sex, etc. So significantly, we have seen that through this constitution, the fundamental rights of us are very much enforceable by the courts, subjected to conditions, because we can see that these rights are called fundamental rights just because of two reasons. Q, because they are enshrined in the constitution which guarantees them, and also they are justiciable in nature. That is, in case of violation, a person can approach a court of law. So what are the basic type of fundamental rights that we can find? Okay, we have got 6 amount of fundamental rights. Okay, एक आता है हम लोग का right to equality under article 14 to 18. ये total कितना parts में आता है? Part 3 में आता है हम लोग का, part 3 of the Indian Constitution. Okay, so right to equality 14 to 18 में आता है. Right to freedom ये आता है किसने? Article 19 to 22. फिर आता है हम लोग का rights against exploitation 23 and 24. Right to freedom of religion 25 to 28. Cultural and educational remedies, that is 29 to 30. And lastly, the right to constitutional remedies, that is around article 32, where we have got some of the following 5 number of writs which has got the powers either with the Supreme Court or the High Court. So today, if you see about all these fundamental rights, so यहाँ पे ये क्या features आ गए? The can state impose limits on the students' fundamental rights in classrooms? Asks Supreme Court. Okay, क्या स्टेट का पावर है टू कर्ब द फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम? तो ये किसका इशू के है? ये अबाउट द हिजाब इशू व्हिच वाज वेरी मच इन न्यूज इन द टाइम पीरियड ऑफ सम लास्ट 2 to 3 months which happened in the state of Karnataka, that is the southernmost state of the country. Okay, southernmost में southern states के अंदर we can find this Karnataka state. Okay, and in this Karnataka state, I am not telling about Bengaluru. बेंगलुरु में ये सब नहीं हुआ है, लेकिन टू द नॉर्दर्न पोर्शंस ऑफ दिस कर्नाटका स्टेट वी कैन फाइंड दिस practice of hijab which is totally getting banned in this area, and this directly got revolted, which across the country was very much of given in news. Okay, so यहाँ पे क्या था, like एक issue था कि यहाँ पे जो 6 बच्चियां थी, 6 students, they were directly banned from entering a college in Karnataka's Udupi district. ओके, उडुपी एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, नॉर्थ में आता है, फॉर वेयरिंग अ हिजाब. हिजाब क्या होता है? दैट इज अ हेड कवरिंग वर्म इन पब्लिक बाय सम मुस्लिम वुमेन. ओके, एंड ये जब इनको अलाउ नहीं किया गया तो ये क्या हो गया? द इशू डायरेक्टली थ्रू अप सम ऑफ द लीगल क्वेश्चंस ऑन रीडिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वेदर राइट टू वेयर अ हिजाब इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड और नॉट. तो अगर मैं देखूं, अगर इन फंडामेंटल राइट्स हम लोग क्या देखे थे? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, तो अगर मैं आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में देखूं तो यहां पे क्या बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट अ रिलीजन, एंड इट इज अ राइट दैट गारंटीज अ नेगेटिव लिबर्टी. दैट मींस that the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercise such freedom. But however, we could see that like all fundamental rights, the state can restrict the rights for grounds on public order, decency, morality, health and other state interests. So यहाँ पे implications कहाँ पे आ रहा है? Implications are with the freedom of conscience, with the right to profess, with the right to practice and with the right to propagation. Okay, so therefore in this cases, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा केसेस हम लोग के सामने आया है. ठीक है, you can see that over the years the Supreme Court has evolved some of the sorts to determine what religious practices can be constitutionally protected and what can be ignored. कौन सा प्रोटेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के एलिमेंट्स की बात बोल रहे हैं. बिकॉज हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द सुप्रीम कोर्ट ओनली. In 1954, I would directly mention a case which was directly named as, चलिए मैं बता देता हूँ. I will refer a case which is directly going with the Shirur, HRUR, Shirur Mut case, MUTT. Okay, Shirur Mut case. ये हुआ था 1954.
तो यहां पे क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हेल्ड इन दिस केस that the term religion will cover every rituals and practices that is integral to the religion. ये सुप्रीम कोर्ट ने तब बोला था 1954 कि एक रिलीजन के हिसाब से अगर कुछ रिचुअल्स है, अगर कुछ प्रैक्टिसेस है, अगर कुछ कस्टम्स है, तो दे आर वेरी मच इंटीग्रल टू द रिलीजन. ये बहुत वर्ड मायने रखता है, इंटीग्रल. So the test to determine what is integral is termed the essential religious practice test. तो ये कहां पे कंसिडर हुआ था? In the Shirur Mutt case of 1954. And in criticism of this test, various scholars directly agree that it is better for the court to prohibit religious practices for public order rather than determining it so essential to a religion that it needs to be protected. And in several instances, the court has applied the test to keep certain practices out. ऐसा नहीं है कि यहां पे इंटीग्रल बोल दिया कि सब प्रैक्टिसेस अंदर घुस जाएगा, ऐसा नहीं. इन वेरियस अदर केसेस आल्सो द कोर्ट हैज अप्लाइड दैट हम लोग कुछ चीज अलग रखेंगे, कुछ चीज इस रिलीजन का इंटीग्रेशन नहीं बनाएंगे. And thereby you can see in a 2004 ruling, Supreme Court even held, okay, that the Ananda mark, okay, एक मार्ग होता है, इट्स बेसिकली अ सेक्ट ऑफ हिंदू. यहां पे भी एक मार्ग होता है आनंद मार्ग बोल के. दिस सेक्ट हैज गॉट नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म द तांडव डांस that is in public streets, since it did not constitute an essential religious practice of the sect. Tandava dance is not an essential religious practice of the Hinduism. ठीक है, ये इतना essential element नहीं है. Every Hindu religion, every Hindu sect does not perform this Tandava religion, Tandava practice. So therefore, जब ये contest आया था कि जो भी part होता है, everything can be considered to be an integral part. तो यहां पे 2004 में ये डायरेक्टली रूलिंग किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आनंद मार्ग हैज नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म द तांडव डांस इन पब्लिक स्ट्रीट्स. सो तांडव डांस होता क्या है? इट इज एक्चुअली, तांडव डांस बोलते हैं लेकिन असली में इसका नाम है तांडव नाट्यम. तो इट इज अ डिवाइन डांस दैट इज परफॉर्म बाय हिंदू गॉड शिवा, एंड शिवा इज डिपिक्टेड एज डांसिंग द तांडवा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? नटराज. Okay, and the Natya Shastra, a Sanskrit treatise on the performing arts, describes various aspects of Tandava. Okay, and therefore we can see about Shiva's Tandava is described as a vigorous dance that is the source of the cycle of creation, preservation, and dissolution. So therefore we could see that Rudra Tandava depicts his violent nature, first as a creator and later as a destroyer of the universe, even of the death of himself. And the Ananda Tandava depicts himself to be as joyful. तो यहां पे यही आनंद मार्ग करने जा रहा था. तो उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको हम नहीं मानते एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रेस्पेक्टिव सेक्ट. तो ऐसे ऐसे करके वी कैन सी द सुप्रीम कोर्ट इन टाइम पीरियड्स विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्चार्जेस. We can see that Supreme Court directly said about that it may or may not be a part of the religion's practices and it may not form an integral part of the religion. So therefore today we see that even some of the various high courts, when they directly put onto the courts for several occasions about setting about the Muslim rights, तो यहाँ पे बहुत सारे high courts ने भी बहुत सारा rulings दिया था that even if I go to the Kerala high courts, okay, particularly on the right of the Muslims women to dress according to the tenets of Islam, okay, तो वहां पे भी वो लोग ने conflicting answers दिए थे. Okay, so we can see that in some period of time this contest is directly going on, and this contest, तो यहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अभी पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया, अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पूछा गया है. तो इन्होंने जैसे सीनियर एडवोकेट दुष्यंत डावे, इन्होंने भी बोला है कि रिलीजियस प्रैक्टिस इज नॉट कन्फाइंड टू अ टेंपल और अ दरगाह. इट्स अ पार्ट ऑफ वंस रिलीजन, कंसाइंस वन कैन नॉट क्वारल विद अ मुस्लिम वुमेन्स फेथ. तो ये डायरेक्टली सपोर्ट में जा रहे हैं चीज. तो ये फेथ है उन लोग का, इसलिए वो लोग हिजाब पहन रहे हैं. तो यू कैन नॉट डायरेक्टली, स्टेट कैन नॉट डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट सच टाइप ऑफ नॉर्म्स. लेकिन यस, यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर, यू हैव टू मेंटेन द प्रोटोकॉल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सोसाइटी फर्स्ट. तो यहाँ पे वही सब डिस्कस किया गया है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द क्लासरूम्स. कैन इट बी अप्लाइड इन द क्लासरूम्स और कैन इट बी नॉट. ओके, तो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कितना उन लोग का फंडामेंटल राइट है, कितना उन लोग का टैपर किया जा सकता है, यही सब अभी डिस्कशन चल रहा है. बट यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ओके, तो ये देखिए
चलो नेक्स्ट पे आते हैं, डेथ पेनल्टी. ओके, सो डेथ पेनल्टी डायरेक्टली गोइंग विथ द कैपिटल पनिशमेंट्स. तो यहाँ पे मैं अगर बोलूं, टुडे यू कैन सी that the Supreme Court recently referred to a constitutional bench the question of how to provide accused in death penalty cases a meaningful, real, and effective hearing of their mitigating circumstances before a trial judge. Okay, so if I directly go with the capital punishment, sometimes called as death penalty, is directly the execution of an offender sentenced to death after conviction by a court of law for a criminal offense. And it should be distinguished from the extrajudicial executions carried out without due process of law. So the term death penalty is sometimes used interchangeably with capital punishment. And though imposition of the penalty is not always followed by execution because of the possibility of the commutations to life imprisonment. Okay, so if I see about the capital punishment when it is directly awarded, so the term capital punishment stands for the most severe form of punishments, and it is the punishment which is to be awarded to the most heinous, grievous, and detestable crimes against humanity. And while the definition and extent of such crimes vary, the implications of capital punishment has always been the death sentence. So what are the special factors of the death penalty jurisprudence in India? So we can see that increase in sexual offenses is one of the causes why death penalty is also rising. Sedition and waging war against India has also been some of the cases of increasing number of death penalties. Okay, suppose if I see about the recent judicial observations related to death penalty, यहाँ पे मैं पहले बोलूंगा about the case in 1983 which goes like the Mithu versus State of Punjab. Okay, and in this very ruling, the Supreme Court ruled that mandatory death penalty is very much of unconstitutional in nature. Okay, and even it's violated, struck down section 30C of the IPC. 303 of the IPC क्या बोलते हैं, which entail a mandatory death sentence for a person who commits murder while serving a life term in another case. So यहाँ पे directly बोला गया है about the mandatory death penalty is very much of unconstitutional बोला गया था यहाँ पे. फिर आता है about the state of Punjab versus Dalwir Singh in 2012, where similarly the Supreme Court ruled that mandatory death penalty as punishment for crimes under various numbers of armed acts or various number of religious acts are very much of unconstitutional. इसके बाद आया था एक 2018 के केस जिसको बोल रहे हैं हम लोग चन्नूलाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. And in this very case, it was noted that the time was appropriate to review the constitutionality of the death penalty and take into consideration reformative aspects of punishments. Okay, so therefore we could see today that there is a huge debate over death penalty. There are people who are going in favor, there are people who are directly going against death penalty. अगर मैं फेवर के बारे में बोलूं तो it is directly a forfeiture of life. Because supporters of death penalty directly believes that those who commit murder because they have taken the life of another have forfeited their own life to life. इसके बाद moral indignation of the victim. Okay, we can see that it is just form of retribution expressing and reinforcing the moral indignation not only of the victim's relatives but also for the law abiding citizens in general. This is directly the highest form of justice. इसके ऊपर कुछ नहीं है. Okay, because for the heinous crimes like the Nirbhaya gang rape case, no other punishment could have deterred the will of the convicts. इसके बाद this is directly a deterrence against crimes. लोगों को अगर ज्यादा पता चलेगा कि रेप का सबसे लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, फांसी होता है, तो लोग क्या करेंगे? They will directly deter to go murder. They will directly deter to go in rapes. तो ये होता है. इसके बाद proportional punishments. The guilty people deserves to be punished in proportions to the severity of their crime. Okay, इसके नीचे आता है like punishments or lifelong punishments or lifelong convictions with some of the hard tasks to face. तो ये सब होता है. ठीक है. Then also there are people who are directly against it because it is directly an eye for an eye, because reformative justice is more productive than innocent people are often killed in the search of retribution. And there's a particular saying that an eye for an eye makes the whole world blind. तो ये against बोला गया है. Then deterrence is a myth. Death penalty is not a deterrent to the capital crimes. That there is no evidence to support that claim that the penalty is deterrent. तो ये deterrence क्या है, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? तो इसीलिए deterrence is also a myth. The political tool of suppression, because the authorities in some countries, for example Iran and Sudan, use a death penalty to punish political opponents. ये भी काम है. Then we can see about the stigma against killing, because with the introduction of lethal injections as execution method, medical professionals participate in executions.
and many professionals have now refused to administer such deaths. Okay, then if I see about the reverence for life principle, death penalty is an immoral punishment since humans should not kill other humans no matter the reasons, because killing is killing. तो ये सब contest चल रहा है अभी death penalty के issues. Okay, so therefore SC also directly moves over here some of the fair hearings towards the death penalty. Okay, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा issues भी है हम लोग का with such executions. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स रहता है, डिलेड एग्जीक्यूशन रहता है, ठीक है. We can see about various number of law commissions today. They have recommended various number of provisions towards death penalty. Okay, मैं अगर लॉ रिपोर्ट 262nd लॉ रिपोर्ट अगर देखूं जो 2015 में ही हो गया था, तो यहाँ पे तो बोला ही गया था कि डेथ पेनल्टी बी एबॉलिश फॉर ऑल क्राइम्स अदर देन टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस एंड वेजिंग वॉर. बाकी सब क्राइम के लिए डेथ पेनल्टी हटा दो. ऑल्सो यहाँ पे बोला गया है अबाउट द पुलिस रिफॉर्म्स. Okay, and it is felt that time has come for India to move towards abolition of the death penalty. And however, the concern is often raised that abolition of death penalty for terrorism related offenses and waging war will affect the national security. So therefore, यहाँ पे कमिटी ने भी बोला है कि टेररिज्म के मामले में, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के मामले में, वेजिंग वार अगेंस्ट द कंट्री के, कोई अगर हथियार उठा ले स्टेट के अगेंस्ट में, उनको फांसी दे दो तुम, लेकिन बाकी सबको छोड़ दो. यहाँ पे यही सब डिस्कस किया जा रहा है अबाउट डेथ पेनल्टी. लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई जो निश्चयता है, ओके, एक एविडेंस है, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन है, वो अभी तक हम लोग नहीं ला पा रहे. ओके, अभी भी यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन चालू है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. सेल्स ऑफ एयरपोर्ट. तो यहाँ पे क्या बोला गया है अबाउट द एयरपोर्ट और अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री हु इज डायरेक्टली फेसिंग लॉस अपॉन लॉस. एंड इसीलिए अभी ये जितने भी एयरपोर्ट्स है ये अभी क्या करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर. So today when I look forward with the process of the Indian aviation crisis, the Indian aviation sector is one of the standout sector in India in the last 28 years. And we know that India is directly the fastest growing aviation market in the world. Today, if I see about the passenger traffic of India, it is currently growing at an exponential rate. If I see about financial year 18 के बारे में भी अगर बोल दो, Indian passengers travel grew more than 16%. Okay, in supposedly मैं अगर इसको population के हिसाब से देखूं, around 2010, okay, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ around 2010, we could see 2010 तक there was hardly 79 million people directly traveling by a flight in India. That includes even domestic as well as the international trips. By 2017, it has doubled to around 158 million. Okay, and it is expected that by around 2037 it will be around 52 crore Indians are expected to use the flights annually. So you can directly analyze the situations over here. So slowly and slowly everything is getting raised, and the aviation sector is also a major job provider. Because today, if I see 75 lakh people are employed through direct and indirect means, which also contributes $30 billion to what? The India's GDP. And nearly 90% of the aviation traffic is domestic, and the low-cost carriers account for around 70% of the domestic seats. Okay, so today, this aviation sector is directly facing crisis because of various number of financial allocations. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पे लॉस ज्यादा हो रहा है. एक कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ अराउंड $600 million of around 2019-20 में इन लोग का लॉस हो गया. ओके, सो यू कुड सी दैट दिस एविएशन सेक्टर टुडे हैव गॉट सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड विदिन अ पीरियड ऑफ सम अराउंड 5 to 10 years. And अभी यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट में एक बोल रहा हूँ कि इट केम आफ्टर द स्पाइसजेट एंड द इंडिगो रिपोर्टेड ह्यूज लॉसेस फॉर सितंबर क्वार्टर ड्यू टू न्यू अकाउंटिंग नॉर्म्स, ग्राउंडिंग ऑफ सर्टेन एयरक्राफ्ट एंड राइज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. अगर मैं अभी स्पाइसजेट और इंडिगो तो फिर भी चल रहा है, अगर मैं अभी जेट एयरवेज का क्राइसिस के बारे में बताऊं, दैट इज इंडियाज ओनली प्राइवेट फुल सर्विस कैरियर which was grounded following the increasing debt and competitions from domestic low budget carriers like Indigo and SpiceJet. And in 2017, it came second to Indigo in terms of passenger market share. But later in 2018, it reported a negative financial outlook because of the increasing losses.
So the airline failed to attract the fresh funding, leading to the loss of the membership of the International Air Transport Associations. So ऐसा नहीं है कि जेट एयरवेज डूब गया, okay, with a depth of around $1.2 billion. Today, however, the crisis is being faced by Jet Airways help its competitors, even SpiceJet as well as Vistara, to increase their profits and also to increase their fleets. So from the very period of even around 2019, we even announced to going to a stake of around 100% stake of Air India under the proposed disinvestment process due to high debt. Okay, and slowly we can see the airports are also getting very much privatized. अभी जैसे हम लोग का गुवाहाटी एयरपोर्ट का ही मान लो अदानी ग्रुप ने ले ली. So in several times this less economical growth, less employment, and also the downturn would affect the economy itself. Also, the high fuel prices and taxes is another cause. Rupee depreciation is another cause of this losses of the airport sectors. The high fare tickets, because due to the large order of the planes, the total capacity of the seats is increasing, leading to increasing needs to fill up the growing availability of the seats. And thus, airline ticket prices are decided by algorithms that change fares based on several factors like past bookings, remaining capacity, average demand per route, and probability of selling more seats later. तो ये इन लोग का dynamics है. Okay. Also today, the airport maintenance is directly growing more and more. Because today, if you directly involved in some of the airports, the airports needs to have some of the international standards. Without maintaining such international standards, obviously the share of the airports with respect to the profiteering will be very low. Also, the people over there that is directly working in this industry has got a less skill force. The low quality training institutes are not training the necessary engineers, technicians, and other professionals to meet the demand of the sector. So therefore, directly going in for some form of disproportionate workforce. And through this workforce congestions, the major airports suffer from congestions of passengers and limited runways. For instance, मैं अगर बोलूं मुंबई एयरपोर्ट का ही, which is a single runway airport, handles over 900 flights each day on an average. And this congestion leads to delay in what? Operations and a decrease in operational efficiency of both the airlines as well as the airports. So therefore, we need to go for a good number of aviation policy. तो इसीलिए National Civil Aviation Policy आया था 2016 में, which directly mentioned about the regional connectivity schemes, replacing by 5/20 rule with 0/20 rule. ये क्या rule होता है? As per 5/20 rule, the local airlines must have at least 5 years of domestic operational experience. And the civil aviation policy scrapped this rule. However, an airline will have to allocate 20 aircraft or 20% of the total fleet of aircraft, whichever is higher, to the domestic sector if they wish to fly overseas. तो आज ये 5/20 रूल नहीं रहा कि 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ फिर चलाओ, ऐसा नहीं रहा. Today, you have to directly go for 20 aircrafts or 20% of the total fleet, whichever is higher, to domestic sector if they wish to fly overseas. Okay. Also, for maintenance, repair, overhaul, we need to promote such number of basic fundamental elements, which can be done through various public-private partnerships. Also, एक project है, उसका नाम बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, which is known as DISHA, DISHA. Okay, ये क्या है? Driving improvement in service and hospitality at airports. Okay. Also, a draft charter of passenger rights is also very important. Okay. एक हम लोग का ऐप है एयर सेवा ऐप. Okay, Air Seva mobile app, which enables the passenger to check the flight status and connect flights in real time. तो ये भी है. Okay, so therefore the government should look into the aviation sector holistically as a part of the economy, as it is going to play a crucial role in the economical development and is no more a sector of the privileged class only. Okay, so today through various number of bailout schemes to an attractive option right now, and rather a policy change and shift to cost efficiency are vital for the long-term sustainability of the respective sector. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बोला गया है कि about how the government may directly help this industries directly renovating and directly renovations with various number of innovations and thereby adding a very good value to the economy of this country. ठीक है, चलो next पे आते हैं. NAC system of assessment.
ओके तो यहाँ पे जब नेक्स्ट सिस्टम ऑफ असेसमेंट के बाद बोल रहा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है अबाउट द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी हुआ था, तो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चला था अबाउट द रेटिंग ऑफ महाराजा स्वराजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ये गुजरात में स्थित है, तो ये वडोदरा बोलते हैं अभी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पुराना है तो इसलिए हम लोग बड़ौदा बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एलिगेशंस लगाया है कि एक बेंच और एक टीम आया था विच इज डायरेक्टली अ पीयर टीम। ओके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आया था, तो उन लोग को ब्राइब दिया गया था। तो उन लोग को ब्राइब क्या दिया गया था, गोल्ड दिया गया था, ठीक है, कैश दिया गया था एंड सम ऑफ द अदर फेवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब के लिए एक इश्यू चला था कि नैक कितना परसेंटेज ये रखता है, ठीक है, दैट इज रेस्पेक्टिव स्टेटस इन दिस कंट्रीज accreditation as well as assessment. So what is this NAAC? So we can see that this NAAC, okay, has like the purpose of the change according to the guidelines or the purpose of this NAAC. We can see they are going in for various number of accreditation and this assessment purpose. So accreditation क्या है, accreditation is the quality check exercise. Okay, accreditation क्या है, quality check exercise. Okay, so when I am directly going in for accreditation, we could see that it checks whether an institution meets certain standards of quality or not. Okay, or also there is a very good benefits of accreditation, because apart from recognition, being accredited also helps institutions attract capital as funding agencies to look for objective data for performance funding. Okay, also it helps an institutions knows its strength, weakness and opportunities through an informed reviewed process. Okay, so today if I see in our country, okay, as of February 8, 2022, we have got 392 universities and 8483 colleges that were NAAC accredited. ओके, सो ये है हम लोग का। ठीक है, देन टुडे इफ आई सी अबाउट द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द NAAC, तो आज NAAC क्या करते हैं, दे गो फॉर इनपुट बेस्ड अप्रोच। इनपुट बेस्ड अप्रोच मतलब क्या, इट डायरेक्टली गोज फॉर यहाँ पे सब हो जाता है, लास्टली एक टीम जाता है टू विजिट द इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे ही ये जो इश्यू था, कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि rather than relying on self study reports, the NAAC should ask institutions to provide evidence such as samples of learning materials, continuous assessment, tasks and final examination to show they have outcome of learning specified in the syllabus. So without going this team who have faced controversies, तो obviously NAAC ने बोला गया कि ये सब false है। ओके, ऐसा हम लोग ने कुछ नहीं किया है, हम लोग ने कभी पैसा नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ अभी हम लोग को बताया गया है कि लाइक the NAAC, which is directly going in for quality check or assessments of Indian higher level education institutions, okay, ये क्या काम करता है, ये कैसे काम करता है, इन लोग का अप्रोच क्या सही है या गलत है। Okay, so in every phenomenon, this NAAC controversy today as in news. Okay, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत we have to know about the situations that is NAAC are directly facing. ठीक है, तो ये एक रेस्पेक्टिव इशू है with the higher education system, because NAAC क्या करता है, they will be going for accreditation of only the higher level education institutions being an autonomous body directly under the University Grant Commission. Okay, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। रूपी रियाल, रूपी रियाल मतलब ये अपना मोदी जी, और ये डायरेक्टली द सऊदी अरेबियन प्रीमियर्स, दैट इज द प्रिंस। सो हियर आई एम डायरेक्टली सेइंग अबाउट दैट अभी सिंस द होल कंट्री इज डायरेक्टली गोइंग इन फॉर वेरियस नंबर ऑफ सैंक्शंस। ओके, सो अभी मैं देखता हूं कि इन द वर्ल्ड वी कैन सी बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर देयर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली एसोसिएटेड, कि हम लोग का यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का दाम बढ़ रहा है, ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, ठीक है, चीजों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। तो overall the global economy is directly getting suffered just because of this crisis directly taking place in the Eurasia regions. Okay, so today if you see that अभी हम लोग के मोदी जी और this premier directly talked about कि क्या हम लोग रूपी और रियाल में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। Okay, today if you have directly consider this rupee real trade, we could directly see that हम लोग इवन बात कर रहे हैं कि हम लोग का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो हम लोग कैसे इस जगह पे, दैट इज इन सऊदी अरेबिया, वी कैन डायरेक्टली promulgate. Okay, because today both the countries have reaffirmed continuous cooperations in joint projects, including even some of the projects that has to be built in India and some of the projects which is to be built in Saudi Arabia. Okay, so therefore today in this visit, तो यहाँ पे कौन विजिट किया था, पीयूष गोयल साहब विजिट किए थे। ठीक है, पीयूष गोयल साहब रियाद में थे फ्रॉम September 18 to 19। ओके, एंड उसी टाइम ये सब डिस्कशन चल रहा था। ओके, तो अभी यू कैन सी इवन द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया इज वेरी मच वेल attributed towards going with for the rupee real trade, because यहाँ पे इन लोग का भी, because we know that Saudi Arabia is directly what, it's Saudi Arabia is directly today the highest
exporter of the crude oil to this country. ओके, सेकंड में आज रशिया है, लेकिन सऊदी अरेबिया को अभी रशिया रिप्लेस नहीं कर पा रहे. ठीक है. सो टुडे इफ यू सी दैट सऊदी अरेबिया इज अ रिलायबल एनर्जी सप्लाई, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल एंड 54% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्टली पेज इन यूएस डॉलर्स. तो इसी को स्किप करने के लिए हम लोग रूपी रियाल ट्रेड के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं. ठीक है. एंड इफ यू गो फॉर रूपी रियाल ट्रेड देन ऑब्वियसली द रूपी वैल्यू विल डायरेक्टली अप्रिशिएट्स. ओके, जो हम लोग का अभी डेप्रिशिएशन स्टेज में है वो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे. ठीक है. तो आफ्टर द रूपी रूबल एग्रीमेंट टुडे वी आर थिंकिंग अबाउट द रूपी रियाल ट्रेड सो दैट वी कैन डू दिस ट्रेड विदाउट डायरेक्टली इंटरफेयरिंग एनी फॉर्म ऑफ डॉलर. ओके, तो ये एक न्यूज था छोटा सा. ठीक है. लास्ट में आता है सिक्योरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. सो व्हेन आई से अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते ही पहले दिमाग में क्या आता है? एक केस व्हिच इज नोन एज केशवानंद भारती केस, ओके, ऑफ 1973. Okay, which introduced the basic structure doctrine, which limited parliament's power to make drastic amendments that may affect the core values enshrined in the constitution. That is like secularism, federalism, republic, democracy, ये सब change नहीं कर सकते. So the verdict upheld the power of the Supreme Court to judiciary even review the laws of parliament that it has directed change. And thereby it evolved the concept of separation of power among the three branches of the government, that is the legislative, executive, and judiciary. So today, if I see about the doctrine of basic structure, it directly says that the parliament has got unlimited powers to amend the constitution, subject to one restriction, that is, it should not dilute or violate the basic structure of the constitution. So the basic structure doctrine is evolved through 4 number of cases. पहला तो केस है 1951 का, 5 जजेस यहाँ पे बैठा था, उसको बोलते हैं हम लोग शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फिर 1964 में आया, 5 जजेस बैठा, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ओके, then we can see about 1973, 13 judges Kesavanand Bharati case, and even one case directly came around in 1980, usko hum log bolte hain Minerva Mill case. In these 4 cases we could see that all such number of attributes, okay, yahan pe 1967 mein aur ek case aaya tha, usko main bol deta hu. 1967 में usko bolte hain hum log Golaknath case. Golaknath case. So through all these cases we can directly see that there is directly a contest between Article 13 as well as Article 368. तो ये contest directly मिटा गया था कहां पे? In this Kesavanand Bharati case of 1973, because in this case it directly upholded the amendments and opined that the parliament is empowered to take away or abridge any of the fundamental rights, but however such changes should not alter the basic structure of the constitution. So in such number of case, ये जो लफड़ा चल रहा था, okay, the doctrine of basic structure, though it is not exactly defined by in the constitution, but through its various contents which have been provided by the judication, from time to time, basic structure is enhanced with some of the new contents, and hence the Supreme Court is yet to define the exact basic structure of the constitution. तो आज अगर मैं देखूं इन दिस होल लिस्ट, सुप्रीम स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, रूल ऑफ लॉ आएगा, जुडिशियल रिव्यू आएगा, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, रूल ऑफ इक्वलिटी, वेलफेयर स्टेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सब आता है. ओके, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक अस, because it's a testimony to the theory of constitutionalism. It saved the Indian democracy. It is directly helping us return the basic tenets of our constitution. It strengthens our democracy by delineating the true separation of power. It restrains the amending power of the legislative organs of a state. And also being dynamic in nature, it is more progressive and open to changes in time, unlike the rigid nature of earlier judgments. तो ऐसा नहीं है कि ये बस अच्छाई के बारे में ही. तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म्स भी हुआ था, because the doctrine has no basis in the constitutional language. कभी देखा भी नहीं है कि constitution में कभी basic structure के बारे में बोला गया है. So it is directly an involvement of the judiciary to power impose its philosophy over a democratically formed government. So there is no elucidation of what exactly constitutes the basic structure. In recent times, if I go for the doctrine has been invoked in cases that have been regarded as examples of judicial overreach. Supposedly the NJAC bill, National Judicial Appointment Commission, which was declared null and void by the Supreme Court by relying on this doctrine. So therefore, we can see that we should, यहाँ पे बोला गया है कि we should directly secure the basic structure, because यहाँ पे छोटा सा अगर तुम देख सकते हो, the basic structure theory was a response of an anxious and activist court to the experience of the working India's concept during its first 25 years. It has come to stay more because of political compulsion and acquiescence, because initially for a long period, no single political party has secured a 2/3 representation in the parliament. तो ये भी एक issue है.
क्योंकि यहाँ पे हर टाइम उस टाइम कोलिशन चल रहा था, लेकिन आज हम लोग का 2/3 स्पेशल मेजोरिटी पे है। तो सिक्योर, ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सिक्योर करना चाहिए नहीं चाहिए, तो ये अभी एक डिबेट चल रहा है, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट टिल येट हैज नॉट मेंशन व्हाट इज एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बस एक इवोल्यूशन है ऑफ द रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस। तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया अबाउट द सिक्योरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, तो दिस आर द 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके, दैट यू कैन डायरेक्टली सी। ओके, ये एमसीक्यूज है, अटेम्प्ट कर लेना। You can even getting also get the answers of this MCQs in the Telegram channel of us. Okay, एक मेंस क्वेश्चन है, देख लेना ये भी। Okay, so the answers will be uploaded in your Telegram channel. Okay, and also do join our Telegram channel by the link given below. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.